नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. Welcome to our YouTube channel and welcome to the lecture in Real Analysis. Real Analysis के इस लेक्चर सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है. ठीक है, यह इस लेक्चर का 58th पार्ट है. Yes, this is the 58th part of this lecture in Real Analysis. है ना. YouTube पर सबसे लंबा चलने वाला दंगल है रियल एनालिसिस का. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि चेक द प्ले लिस्ट ऑफ रियल एनालिसिस. ओके, एंड यू विल बी एबल टू सी द कंप्लीट 57 लेक्चर इन अ रो. ओके, everything has done beautifully with previous year questions, and this evening is dedicated for PYQs on uniform continuity. Yes, this lecture is dedicated for previous year questions of uniform continuity. We are going to start this session with a question that has been asked in TIFR. Yes, Tata Institute of Fundamental Research. है ना. TIFR के क्वेश्चन से इस सेशन की शुरुआत जो है वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं. रोहित जी एंड अमन जी, बोथ ऑफ यू आर वेलकम ओवर हेयर. आई वुड ऑल्सो लाइक टू से थैंक यू ऑल, है ना, बिकॉज आई एम सीइंग द पीपल आर गोइंग टू ज्वाइन आवर चैनल डे बाय डे. सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग दीज सेशंस टू द नीडी. है ना, यह जो सेशन है निश्चित तौर पे आप शेयर कर रहे हैं तभी जो सब्सक्राइबर्स है वो बढ़ रहे हैं. अधिक से अधिक लोगों तक ये जो फ्री लेक्चर सीरीज है, आज 58th पार्ट लेकर के हम आए हैं. 58वां भाग जो है आज, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं TIFR और CSIR नेट के. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ऑप्शन बन के आते हैं CSIR में, है ना. कम से कम हम 60-70 क्वेश्चंस यूसी है या नहीं है, बिकॉज इन यूसी व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर, यू विल बी एबल टू सी दैट मोर देन वन रीजन्स आर देयर टू से द फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, and there may be more than one reason to say that the function is not uniformly continuous as well. ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये कहने के लिए एक से अधिक रीजन आपके पास होंगे. ठीक है, and this makes this topic very very interesting. So yes, we are going to start the session with a TIFR question, and thereafter we will discuss a lot of questions. You will get a lot of chances to give the right answer whenever it will be asked. So I would like to welcome our regular contestants are over there. I can see Rohit Kumar Pandey ji, Aman Shukla ji, Deepak Kumar Singh ji, Prabhakar Rao ji, Neetu Kumari Jalad ji. You all are welcome. Once again I would like to say thank you very much for sharing these sessions to the needy. And that's why daily I am seeing the subscriber of this channel are going to increase. Many people are going to get advantage of these courses, which is really really appreciable. I am thankful for all your appreciations in terms of anything. है ना, आप जिस रूप में भी लोगों तक यह जो फ्री लेक्चर सीरीज है, जो कि लगभग एग्जाम आते आते जो है 100 लेक्चर्स का मतलब जो है एक जकीरा बन जाएगा एक प्रॉपर ग्रेडिंग के साथ. ठीक है, तो उन लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा. और नॉट ओनली द थैंक्स, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस सेशन विथ अ TIFR क्वेश्चन. आई वुड लाइक टू से द माइनस साइन इज ओवर हियर. ओके, सो f of x is e to the power minus 1 by x over x, where the domain is open interval 0 to 1. Then what would you like to say? I'm waiting for your answers, I'm waiting for your response, and thereafter we will get the momentum to give the answers. Come on, एक अच्छी कोशिश की उम्मीद आप सबसे यहां पर इस वक्त.
ठीक है, इसमें से कौन सा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? यू शुड नॉट फॉरगेट दैट व्हेन अ बाउंडेड इंटरवल इज देयर, when a bounded interval is there, then what is the best thing to say? You just need to see the limit at 0 from right. You just need to see the limit at 1 from the left, है ना? 0 पे राइट हैंड लिमिट, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर गया फाइनाइटली, then you will be able to say yes, it's uniformly continuous, otherwise not. Okay, so I just want to see your responses. What would you like to say? Come on, I am waiting for your response. Okay, all these results have been discussed last night. Okay, so come on, at least one answer should be there in front. This time Srinivas Sahu ji has joined. So Srinivas Sahu ji, there is a question from TIFR to welcome you. F of x is equals to e raised to the power minus 1 over x x lies between 0 to 1. Okay, Deepak Singh ji is saying B and C. But Deepak Singh ji, you should remember that your x is not going beyond 0 से 1. आपका जो x है 0 से 1 के beyond नहीं जा रहा है. You have to be very careful to say anything. दीपक जी, क्योंकि अब मान लीजिए 0 पे अगर आप देखोगे तो e टू दी पावर माइनस 1 ओवर x है, तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है, तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 पे चला जाएगा. So you have to be careful to say anything, Deepak ji. And what other people says will be also interesting to see. ठीक है? So first of all, you should see the limit at 0, right? है ना, 0 पे राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा, isn't it? e to the power minus 1 over x, right? Yes. Then what the thing is going to happen? Certainly you are going to write limit x tends to 0 plus, okay, 1 over x into e to the power 1 by x. Yes, Deepak ji, finally you have revised the answer. And yes, now it seems fine. So Deepak ji, who gives the great responses always, and good responses always, I can say. So here you can write what? You can write what? Limit x tends to 0 plus 1 over x into e to the power 1 over x. And this can be written as 1 over x over e to the power 1 by x. Okay. So here what can you see? It is infinity over infinity form. This is infinity over infinity form. So from here what can we see? Limit x tends to 0 plus infinity over infinity form is there. Then nobody will stop you to use L'Hopital's rule. L'Hopital's rule का use कर सकते हैं. And in L'Hopital's rule you are going to differentiate this numerator with respect to x. And that's why it is going to be minus 1 over x square. Isn't it fine? Yes. And here is e to the power 1 by x. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e to the power 1 by x. और चेन रूल से 1 by x का डेरिवेटिव once again minus 1 over x square. So these two things are going to be cancelled. And finally nobody will stop you to write 1 over e to the power infinity, which is certainly 0. तो यहां पे यह जो TIFR का क्वेश्चन था जिसमें आपने 0 पे राइट से अप्रोच करके एक फाइनाइट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को यहां पे देखा, isn't it? You were able to see a finite existence of limit is there. Good evening Annu. Yes, प्रभाकर राव जी, श्रीनिवास जी, दीपक जी. तो 0 पे राइट से लिमिट का एग्जिस्टेंस दिख रहा है और 1 पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन के लिए. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एट 1.
So limit x tends to 1 minus e raised to the power minus 1 over x. So certainly this is what? E to the power minus 1 over 1. So this is 1 over e. So the limit exists finitely at both the endpoints. And the things are what? It's a bounded set. So अगर बाउंडेड सेट पे क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होता है. अगर जीरो पे राइट से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वन पे अगर लेफ्ट से लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी विल से कॉन्फिडेंटली दैट certainly this is uniformly continuous. Are you ready for the next TIFR question? If you have any doubt, then certainly you are welcome to speak. Otherwise, we are going for the next one. Once upon a time in TIFR, this question was asked that which of the following continuous function f from 0 to infinity. Remember, here this 0 is not included in the domain. So 0 to infinity to r can be extended to a continuous function on 0 to infinity. कहने का मतलब ये है कि ये जो ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी है, ठीक है, इसमें ये सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस गिवन है. तो इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कि इस डोमेन पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए? व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग कि इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस है. यू हैव टू से अबाउट इट. ठीक है, तो तभी तो मतलब इस डोमेन को हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं. तो इस डोमेन में जीरो नहीं है, और एक्सटेंड करके जो डोमेन ला रहे हैं उसमें यहां पे जीरो है, जीरो शामिल है. ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल टू से कि किस फंक्शन को, एबीसीडी 4 ऑप्शंस आर गिवन एंड आउट ऑफ दीज 4 which can be extended. I mean to say which of the following, in other words you can say simply which of the following function is continuous at 0 also. इसी बात को घुमा के पूछ दिया गया. They have turned the statement only, and this time Jalaj ji is very quick. But Jalaj ji, how can you say cos 1 by x at 0? Cos 1 by x at 0 is the limit exist? cos 1 by x लिमिट कहां से एग्जिस्ट करेगा जीरो पे? फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगा लिमिट. ठीक है, sin 1 by x पे भी नहीं करेगा और 1 by x पे भी नहीं करेगा. यू कैन सी. ओके, आप b के लिए चेक कर सकते हो. यू कैन सी लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, लेफ्ट से या राइट से. 1 minus cos x over x squared is there, right? So it will become limit x tends to 0, 1 minus, and cos x का क्या है? एक्सपेंशन फॉर्मूला यू ऑल नो. 1 minus x square by factorial 2 plus x4 by factorial 4 minus x6 by factorial 6, and by doing so, and over what the thing is there? x square, right? Yes. So 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा and this minus minus plus, so limit x tends to 0, है ना, x square by factorial 2 minus x to the power 4 by factorial 4 and plus x to the power 6 by factorial 6 and minus, and by doing so, here is x square. And no, everybody, yes, Deepak ji and Srinivas ji, you people. So now you can cancel this x square from here. ये क्या हो जाएगा? तो x square बन जाएगी, है ना. Here you will get x to the power 4. So all the term are going to become 0 except this 1 by 2. So finally you are going to get the value 1 by 2. So you can see this function, yes, by using L'Hopital's also. Otherwise Jalaj ji, we are just taking common x square from the numerator and denominator, and these two are going to be cancelled. Otherwise L'Hopital's rule भी, but in that case you have to use L'Hopital's rule twice. So why shall you do that? You will just take x square common from the numerator and denominator. These two will be cancelled and nobody will stop you to say it's 1 by 2. Okay, so hence you can see what? Hence you can see what? This function is going to be continuous at 0 as well. Only B, no other than this option B. Okay,
सो बी जो है वो 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्टिन्यूटी है, इस कॉन्टिन्यूटी को हम ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी से एक्सटेंड कर दिए क्लोज्ड इंटरवल 0 से इंफिनिटी के ऊपर. सो दैट्स द रीजन दिस इज गोइंग टू हैपन. नाउ which of the following is uniformly continuous on the domain is stated? This is also a previous year question and it was asked in IIT JAM. Okay, you can see the personality of the question and certainly you can say the personality of the questions of on uniform continuity is similar for IIT JAM, CSIR NET, GATE, NBHM and all those. And you will also see a lot of options that used to come in these examinations. But now I want to see some responses from your side. Which of the following function is uniformly continuous on the domain as stated? Come on, I am waiting for your response. I am waiting for your response. What would you like to say? More than one option may be true. You may put your response in the comment section. And certainly this evening we are going to discuss a lot of questions that used to ask in as the options. I would also like to say thank you very much all of you for sharing these sessions, because since last 2 days I am going to see that the people on this channel are going to increase, and certainly it helps a lot of people and it gives the motivation, it gives certainly the power to come up with energy and questions on this channel. And this time 2 people I can see: Srinivas Sahu ji, Prabhakar Rao ji, Jalaj ji, Aman Shukla ji, Annu and Deepak Kumar Singh ji. But Deepak ji, be careful. Prabhakar Rao ji, you have to be careful as well. Srinivas ji, think twice. Anu, for option D, are you able to see that the limit exists at the both end point? क्या जो लिमिट है दोनों ही एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाएगा? ये जो आपका इंटीग्रल पॉइंट है 1, ठीक है, इस पे आप क्या कहोगे? ठीक है, 0 से 1. ठीक है, x lies between 0 से 1. So x lies between 0 से 1, so certainly it will become 0. All right, and here is this. So limit exists. What would you like to say about it? ठीक है, यस श्रीनिवास जी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? तो यहां पे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जो आपका एक्स स्क्वायर है ये तो आपका नहीं होगा, ए एन आपका क्या है यहां पे? अंडर रूट एन. ठीक है, ए एन आपका क्या है? अंडर रूट एन, और बी एन आपका क्या है? अंडर रूट एन प्लस 1. ठीक है, तो आप यहां से क्या देख सकते हो? फ्रॉम हेयर व्हाट कैन यू सी? और यू शुड टेक एन एंड एन प्लस 1 बाई एन. ठीक है, एन एंड एन प्लस 1 बाई एन. सो यू कैन सी मॉड ए एन माइनस बी एन. सर्टेनली okay Deepak Singh ji, we will discuss a lot of things, you don't need to worry at all. हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि डेरिवेटिव नॉट बाउंडेड. बहुत अच्छा श्रीनिवास जी, आप ये कह सकते हो कि ये जो है आपका 2x हो जाएगा, और 2x कहां से कहां जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है. ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है. ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये जो पॉइंट आपका 1 है, यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 1. ये तो आपका जो लिमिट है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों?
क्योंकि 1 के जस्ट लेफ्ट में आपका जो लिमिट है वो 0 हो जाएगा, 1 के जस्ट राइट में 1 हो जाएगा, तो 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 1। ऑलराइट, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0 एंड राइट हैंड लिमिट इज व्हाट? राइट हैंड लिमिट इज व्हाट? 1। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 1, है ना, वर्टिकल लाइन सेपरेशन है यहां पे। ऑलराइट, यहां पे 1/x के लिए, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, an माइनस बी एन ये 0 पे जा रहा है। ठीक है, an माइनस बी एन ये 0 पे जा रहा है, लेकिन मॉड f ऑफ an, तो f ऑफ an आपका क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, n माइनस n प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप देख लो, ये 2 पे चला जाएगा, बिकॉज ये आपका क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2n इंटू 1/n एंड प्लस 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड इट विल गो टू 2, इट डज नॉट गो टू 0। तो f ऑफ an माइनस f ऑफ bn 0 पे नहीं गया, तो नॉट, यू सी। ठीक है, ये 1/x है, तो 1/x 1 से इंफिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, 1/x जो है ये 1 से इंफिनिटी पे जा रहा है, तो 1 से इंफिनिटी पे जा रहा है, तो 1/x इस तरीके का। ठीक है, यहां पे 1 से शुरू करेंगे और इस तरीके से लेंगे। ठीक है, इसका भी अगर आप चाहो तो 1 पे आप लिमिट का एग्जिस्टेंस देख लो, 1 आ जाएगा, और इंफिनिटी पे आप लिमिट का एग्जिस्टेंस देख लो तो 0 आ जाएगा। तो लिमिट यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है 1 पे भी, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है किस पे? इंफिनिटी पे भी। तो ये आपका हो जाएगा tan x दिक्कत करेगा। ठीक है, -π/2 से +π/2, -π/2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, +π/2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, -π/2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, +π/2 पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और यहां पे 1 पे भी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, 1 पे भी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। इज दिस क्लियर? इज दिस फाइन? ठीक है, तो अब अगर हम लोग जो भी बात यहां पे करना चाहें, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे हैं एंड यू हैव टू से अबाउट दैट। ठीक है, मैं जानता हूं कुछ लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, तो वो आप हमें सेंड कीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर में कुछ कंफ्यूजन कुछ लोगों को होगा। ठीक है, वो होनी भी चाहिए। ठीक है, तो जो कंफ्यूजन है वो डेफिनेटली सेंड कीजिएगा। देखिए, मैं यहां पे एक चीज ही ये बोलना चाहूंगा कि यहां पे 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, सॉरी, एट x इज इक्वल टू 1, किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ओके, यहां पे -π/2 +π/2 पे जो प्रॉब्लम हो रही थी वही चीजें यहां पे भी है। तो यहां पे क्या है कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वर्टिकल लाइन सेपरेशन। ठीक है, 1 यहां पे इंक्लूडेड है, तो कंक्लूजन जो है यू हैव टू गेट द कंक्लूजन, एंड आई नो देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ कंक्लूजन्स फ्रॉम योर साइड, एंड व्हाई आई वांट टू हियर फ्रॉम योर साइड। इफ यू हैव अंडरस्टूड दैट, देन इट्स ग्रेट। If you will have doubt, then you have my contact number, anything to discuss. Okay, some sense of things should be there. Yes, LHL is -1 नहीं, यहां पे LHL 0 हो जाएगी ना, RHL 1 हो जाएगी। श्रीनिवास जी, LHL 0 हो जाएगी, ठीक है, और RHL 1 हो जाएगी, क्योंकि LHL के लिए तो इस लाइन पे आ जाओगे, RHL के लिए एक स्टेप ऊपर भाग जाओगे। Is this clear? Is this fine? It is going to be 9. What would you like to say? What would you like to say? Okay. तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस यहां पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। We would like to discuss some very interesting questions in front of you. ठीक है? Yes. So now if your function f of x is e raised to the power 1 minus x squared, ठीक है, ओके, on 0 से 1, will it be UC?
क्या यह यूसी होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 पे, क्या यह यूसी होगा? यस और नो? ठीक है, 0 और 1 दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, है ना, बाउंडेड इंटरवल दिया हुआ है, तो 0 पे और 1 पे लिमिट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, फाइनाइट एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट शुड बी देयर। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से? क्या यह यूसी होगा? व्हाट वुड यू लाइक टू से? विल इट बी अ यूसी? भैया इसमें क्या है? दीपक जी, इस क्वेश्चन में है ही क्या भैया? 0 पे देख लो, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 0, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0, ये हो जाएगा e। और 1 पे देख लो, लिमिट x टेंस टू 1, तो ये हो जाएगा e का पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/e। 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर गया, 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर गया, कोई नहीं रोक सकता यूसी कहने से। क्यों? क्योंकि अगर फाइनाइट बाउंडेड इंटरवल है तो दोनों एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट किया, मतलब हो गया यूसी। अच्छा, अगला जो सवाल है जो कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, हालांकि वो क्या किया था कि कंपोजिशन दे दिया था, ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ये पूछ लेता हूं, उसके बाद बता दूंगा कि उसने कैसे घुमा के पूछा था, ठीक है। सवाल यह है कि जैसे अगर आप मान लो कि साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर कहां पे? 0 से इंफिनिटी पे, क्या यह यूसी होगा? यस और नो? 0 से इंफिनिटी पे साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, यूसी होगा या नहीं होगा बताइए। ये सवाल कैसे पूछा था? 2022 का फरवरी वाला पेपर देखिएगा, उसने क्या किया था, एफ एक्स ऐसे साइन एक्स ले लिया था और जी एक्स ऐसे एक्स स्क्वायर ले लिया था, ठीक है, और एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स के बारे में पूछा था। तो एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स क्या होगा? ये तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि साइन एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। यस, राजीव जी, श्रीनिवास जी, अमन शुक्ला जी एंड घोषिया बानो, ऑल दीज पीपल आर एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहली बात कि यू आर गोइंग टू टेक द सीक्वेंसेस इन बिटवीन। आप यहां पे ए एन एक सीक्वेंस ले लो, कैसा? √2n पाई टाइप, ठीक है। दूसरा जो आप सीक्वेंस लोगे बी एन, वो किस टाइप का लोगे? √2n पाई प्लस π/2। कुछ लोग कहेंगे भाई मॉड an माइनस बी एन ये 0 पे भी तो जाना चाहिए। मैं कहूंगा हाँ भाई जाना चाहिए। अंडर रूट ये हो जाएगा 2n पाई माइनस √2n पाई प्लस π/2, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, चला जाएगा 0 पे बेचारा। ये हो जाएगा 2n पाई का रूट एंड प्लस √2n पाई प्लस π/2, और डिनोमिनेटर में क्या है? √2n पाई प्लस √2n पाई प्लस π/2, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर व्हाट कैन वी सी? ये क्या हो जाएगा? √2n पाई, सो इट विल बिकम इट्स स्क्वायर 2n पाई एंड माइनस √2n पाई प्लस π/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2n पाई माइनस π/2, ठीक है, ये चीजें। एंड इट विल बिकम व्हाट? √2n पाई प्लस √2n पाई प्लस π/2, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे भाई an माइनस बी एन को तो पहले 0 पे भेजिए, तो ये दोनों कैंसिल, माइनस π/2 का मॉड, एंड ये जो n है दिस n विल help you to send this mod an minus bn to 0. But what about mod f of an minus f of bn? इसके विषय में क्या कहना है आपका? ये जब आप देखोगे तो ये हो जाएगा साइन 2n पाई, है ना, क्योंकि an क्या है? √2n पाई, और f क्या है? तो साइन x स्क्वायर, तो x के जगह पे हो जाएगा an स्क्वायर, और an है √2n पाई, तो ये हो जाएगा साइन 2n पाई एंड माइनस
f of bn, so it will become sine 2n pi plus pi by 2. And from here, what are the things you are going to see? This sine 2n pi is 0. Sine 2n pi plus pi by 2 is what? Minus sine pi by 2, which is certainly 1. And as this is not going to 0, therefore you will be able to say that this is not UC at all. This is not UC. यह जो है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है. ओके, सो आई होप यू गेट इट. एंड नाउ आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? देखिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, मैं सारे क्वेश्चंस को यहां पे पूछूंगा आपसे, लेकिन ट्रू फॉल्स के माध्यम से पूछूंगा. ये क्वेश्चन 2022 में आप देख लीजिएगा, दो फंक्शंस के कंपोजिशन के रूप में इसी को fx बराबर ये ले लिया गया था, gx बराबर ये, f कंपोजिशन g ऑफ x के बारे में पूछा गया, तो f कंपोजिशन g ऑफ x के x ही तो आपका ये है sin x स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप फंक्शंस को अलग अलग डोमेन पे वो करना सीख जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. चलिए, 2022 चल रहा है और 2023 आने वाला है, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक f of x is equals to sin x square on 2022 to 2023. What would you like to say? Is it UC? क्या यह UC होगा? Uniformly continuous होगा? So this is the question right now. What would you like to say? What would you like to say about it? Within 30 seconds you should say. Within 30 seconds. You should not take more than 30 seconds. And this time, Jalaj is there with the right answer. But what other people thinks? If this is a bounded interval, then why you people are taking time to say the facts? Isn't it? At sine 2022, it will become sine 2022 chi square, which is finite. So at 2022 and 2023, the limits are going to exist finitely, so you should not take the time to say yes. And this time I can see many people are saying the same thing. Deepak Kumar Singh ji, Srinivas Sahu ji, Gaushia Bano, Jalaj ji, Aman Shukla ji, and Rajiv Gandhi ji. All these people are rocking right now. Now I am also going to change the domain because the exam is going to change the domain. Once again, I am going to take sin x squared on r. Then what would you like to say? Some people can ask. कुछ लोग कह सकते हैं कि भैया यहां पे आपने काउंटर एग्जाम्पल के रूप में सीक्वेंसेस लिए अंडर रूट 2n पाई और bn अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, लेकिन यही सीक्वेंस काउंटर एग्जाम्पल के रूप में आपने यहां पे क्यों नहीं लिया? Why you people have not taken the sequence 2n pi in this? Because this is not allowed. आप ये भी तो कह सकते हो ना कि ये सीक्वेंस इस डोमेन में क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सीक्वेंस अलाउड ही नहीं है. जब हम सीक्वेंस लेते हैं किसी भी डोमेन के अंदर, तो उस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को छोड़ के उस डोमेन के अंदर लाई करने चाहिए. ठीक है, यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो r है जो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में वो जो दोनों सीक्वेंसेस थे काउंटर एग्जाम्पल वाले, an अंडर रूट 2n पाई और bn अंडर रूट 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये दोनों के दोनों सीक्वेंसेस जो है काउंटर एग्जाम्पल का काम करेंगे. और दूसरी बात, जब यह फंक्शन जो है 0 से इंफिनिटी पे यूसी नहीं हुआ, तो इसका जो सुपर सेट है उस पे कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. उसके सुपर सेट पे ये कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे. ऑल राइट, इज दिस फाइन? इज दिस क्लियर? यस. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क अनदर क्वेश्चन. ओके, f of x is equals to 1 over 1 plus x square on 0 से 1. What would you like to say about it? Is it UC? f of x क्या है? 1 over 1 plus x square. कहां पे? 0 से 1 पे. क्या यह UC होगा? Yes or no? Within seconds you have to say.
एफ ऑफ एक्स 1/1/x², 0 से 1 पे, क्या यह यूसी होगा? विल इट बी यूसी, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और नॉट? व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? हो जाएगा, क्योंकि 0 पे इसका जो लिमिट है 1 हो जाएगा, 1 पे इसका लिमिट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो यस, दिस इज गोइंग टू हैपन। ऑल राइट, यस। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट। जैसे साइन एक्स कहां पे? ऑन 0 से इंफिनिटी। क्या यह यूसी है? यू हैव टू बी केयरफुल टू से एनीथिंग। क्या यह यूसी होगा? साइन एक्स ऑन 0 से इंफिनिटी, will it be UC? Will it be uniformly continuous? Will it be UC? Come on. Rajiv Gandhi ji is saying not UC, but what other people thinks? This time Prabhakar Rao ji is also with Rajiv ji. And Aman Shukla ji is also saying no, it's not going to be. Okay. Gaussian, how can you say that this is UC? You can take the sequence an as what? 2n pi. Because this 2n pi is allowed in this interval. And you can take the sequence 2n pi plus 1/2n pi in this interval as well. क्योंकि 0 से इंफिनिटी में इस दोनों ही सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स लाई करेंगे, तो ये दोनों सीक्वेंस अलाउड हैं। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन वेरीफाई दैट mod an minus bn is going to 0, but mod f of an minus f of bn is not going to 0. Is not going to 0. And that's why you will say no, it's not going to be a UC. यह UC नहीं होगा। Now I am going to ask some more questions. Yes. If you are given f of x is equals to x sine 1/x on 1 से infinity, will it be UC? x sine 1/x on 1 से infinity, will it be UC? Yes or no? Will it be UC? क्या यह UC होगा, हाँ या नहीं? Okay, Gaussian, no problem. You have the second chance to say the right thing. F of x is equals to x sine 1/x on 1 से infinity. Will it be a uniformly continuous function? What would you like to say? And this time Jalaj ji is very quick, and Gaussian and Rajiv ji, these two people are also. I'd also like to tell you all that today I had not sent the PDF, but sometimes I will certainly send the PDF on our Telegram channel also. Sometimes there will be no PDF because sometimes you should go through with the questions, sometimes you will attempt the direct questions live and exclusive. Both of the things will be fruitful for you. So the people who had not joined our Telegram channel, certainly go in the community of my channel and they can get the link to join our Telegram channel. अदरवाइज जो टेलीग्राम चैनल का नाम है वो हमारे यूट्यूब चैनल के नाम के बराबर ही है, मतलब वही नाम है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए सो दैट यू विल गेट द अपडेट्स, लिंक्स एंड पीडीएफ्स ओवर देयर. सो नाउ यहाँ पे जो है यू पीपल नो we have to check the limit at both the end point. At x is equals to 1, you can easily see that the limit is nothing but sine 1. And at x is equals to infinity, once again you cannot forget that fundamental that allow you to say that limit x tends to infinity sine 1 over x over 1 over x, and certainly this will be what 1 है ना. x अगर इंफिनिटी पे जा रहा है तो यहाँ पे भी अगर 1/x है, यहाँ पे भी अगर 1/x है
है ना, 1/x को h ले लोगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 sin h/h ही आ जाएगा। तो यहां पे दोनों ही एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो ये चीजें बताई गई थी, अगर अनबाउंडेड इंटरवल भी है बट इफ द लिमिट एग्जिस्ट एट बोथ द एंड पॉइंट देन वी विल से यस इट्स यूसी। सो दैट्स व्हाई व्हाट शैल वी से, यस इट्स यूसी। ठीक है, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, और अगर बाउंडेड इंटरवल होता है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू है। सो हाँ, मैं बार बार जो चीजें हैं उसको हाईलाइट करता हूं। मैं आपसे यही सवाल पूछता हूं, x sin 1/x, अगर मैं यही सवाल ले लेता हूं, ठीक है, x sin 1/x 0 से 1 पे, तो क्या यह यूसी होगा? f of x इज इक्वल टू x sin 1/x 0 से 1 पे पूछ रहा हूं, 0 से 1 पे, विल इट बी यूसी? जीरो से 1 पे विल इट बी यूसी? व्हाट वुड यू लाइक टू से? f of x इज इक्वल टू x sin 1/x, विल इट बी यूसी? क्या यह यूसी होगा? यही सवाल है इस वक्त। क्या कहते हैं लोग? प्रभाकर राव जी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, ये देखने वाली बात यहां पर। f of x is equals to x sin 1/x on 0 to 1. This time Deepak ji, Prabhakar Rao ji and Rajiv Gandhi ji, all these people are rocking. And why not? Certainly they will rock. Because at x is equals to 1, they don't have any hesitation to say that the limit is going to exist at x is equals to 1. But what about at x is equals to 0? Certainly they will think a bit. Okay, they will just think that, oh, this sin 1/x lies between -1 to +1, and if we are going to multiply with x, then as x will go to 0, so this will go to 0, this will go to 0, and we cannot forget the sandwich to say, oh, this limit is also going to 0. So your limit is going to exist at both the end point, either with the help of sandwich theorem or directly, and that's why it gives you the strength to say, yes, it's UC. हाँ, यह UC हो जाएगा। Okay, that's great. So now I am going to ask about tan inverse x. What would you like to say about tan inverse x? F of x is equals to tan inverse x on R. Is it UC? Is it UC? Tan inverse x. Tan inverse x at R. What would you like to say? Will it be UC? Come on, guys. What would you like to say about tan inverse x on R set of reals? What would you like to say? Will it be UC? क्या यह यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा tan inverse x on R? Oh, Deepak ji, but Rajiv ji is not agree with you, Deepak ji. But who is right? What the third empire says. And this time Jalaj ji is there with Deepak ji. So Rajiv ji, you are alone. Is there anybody who will help you? Or they will go with the fact? Okay, so tan inverse x is there. And this R is what? -infinity to +infinity. Okay, so certainly you can say that as x tends to -infinity, tan inverse x will go to where? Nobody will hesitate to say -π/2, because they cannot forget. Okay, this is π/2, this is -π/2. So as x tends to -infinity, your y value will be -π/2, and as x tends to +infinity, your tan inverse x will be +π/2. And that's the reason you will not hesitate to say yes, it's UC. है ना, क्योंकि अनबाउंडेड इंटरवल पे भी अगर लेफ्ट मतलब दोनों ही एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है, देन वी विल नॉट हैव एनी हेजिटेशन टू से द फैक्ट्स। ठीक है, यस।
now okay, so now I am going to ask the next question. If you have f of x is equals to 1 over 1 plus x square, okay, on minus infinity to plus infinity, what would you like to say? Will it be UC? Yes or no? One over 1 plus x square on minus infinity to plus infinity. Will it be UC? Will it be uniformly continuous? You just need to see the limit at minus infinity and plus infinity. ओहो प्रभाकर जी, what other people says? क्योंकि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू माइनस इंफिनिटी भी है, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल गो टू 0 and limit x tends to plus infinity is there, 1 over 1 plus x square, then this will go to 0 as well, isn't it? So limits are going to exist at both the endpoint, no matter this is an unbounded interval. If the limits are going to exist at both the endpoint, then we will not hesitate to say yes, it's UC. Isn't it fine? Yes. So now the last question of this evening. Okay, one more question. Yes. The next question is what? What would you like to say about f of x is equals to x square over, yes, 1 plus x on 0 to infinity? Will it be UC? क्या यह UC होगा? क्या यह UC होगा? Yes or no? Will it be UC? And this time Rajiv ji is saying not UC, but be careful Rajiv ji. Check its derivative on the interval. This is a big hint, Aman ji. Check its derivative on the given interval. Check its derivative on the given interval and then decide the fact. Don't do the things in a hurry. This time Prabhakar Rao ji is saying something meaningful, but what other people says, what other people thinks? Okay, one of the most democratic channel on YouTube, you are over here, and certainly we used to hear all your voices. And here what the thing is there, f of x is equals to x square over f of x, 1 plus x. So, okay, no worries. So f dash x will be what? Certainly 1 plus x ka whole square, and thereafter v into derivative of u and minus u into derivative of v. Okay, we just want to check whether its derivative is bounded over here or not. So you can see what? 1, it will become 2x plus 2x square and minus x square, and here is what? X square plus 2x plus 1. Okay, so now what the things we are going to see? This is x square plus 2x, and this is what? X square plus 2x plus 1. Okay, so what would you like to say? On 0 to infinity, once again you have the chance to revise your answer.
is this function, is this f dash x bounded on 0 to infinity? Is this f dash x bounded on 0 to infinity? Because at 0 you can see its value is 0. Between 0 to infinity at any finite number, certainly you will get f dash x a finite number. So it seems bounded. So what about at x is equals to infinity? If at x is equals to infinity, if this is going to be bounded, then we are done. Okay, so if you will take x square plus 2x as common, then it will become 1 plus 1 by x square plus 2x. Right? And from here, what are the things you are going to see? This 2 will be cancelled. This will go to 0 as x tends to infinity, and you will be here at 1. So at x is equals to infinity also, okay, the limit is 1. So this enables you to say that your derivative is bounded. Okay, therefore derivative is bounded. So if the derivative is bounded, then the function is uniformly continuous. But the converse of this statement is not true. Okay, so I hope you enjoyed these sessions. Okay, and from very soon, after taking one more problem sessions on UC, I will problem session on UC, I will start uniform convergence of functions and uniform series. I mean to say कि series of functions और sequence of functions ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम सेशन हम लोग और लेंगे जो कि जनरलाइज्ड प्रॉब्लम सेशन होगा, जो कि कल होगा 8 से 9. आज थोड़ा पहले 10 मिनट पहले हम छोड़ रहे हैं बिकॉज आई हैव सम वर्क टू डू. ओके, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग द चैनल, है ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग डेफिनेटली बढ़ रहे हैं एंड ये आप ही लोग शेयर कर रहे होंगे तभी बढ़ रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच, है ना. और आप लोग जिस तरीके से भी इन लेक्चर्स को, सेशंस को अप्रिशिएट करते हैं, वो निश्चित तौर पे हमारा जो है उत्साहवर्धन करता है. सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू हु आर ओवर हेयर. जलद जी, प्रभाकर जी, श्रीनिवास साहू जी, अमन शुक्ला जी, अगर आप ये लेक्चर सीरीज उन लोगों तक पहुंचा दें जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, तो इससे आपका कुछ लॉस नहीं होगा. विद इन 2 or 3 minutes यू कैन डू इट, बट सर्टेनली इट विल हेल्प देम एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो to come up with some more energy, questions and things in front of you. ठीक है, so thank you very much once again, है ना, है ना. I would like to say बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. जलद जी, श्रीनिवास जी, अमन शुक्ला जी, गौशिया बानो, अमन शुक्ला जी, दीपक कुमार सिंह जी and प्रभाकर राव जी. And Gaushia, I would also like to say I am seeing your name first time. So I would like to say this is an unstoppable continuous lecture series in real analysis. And believe on me, if I will get success, है ना, कम से कम अगर 10 लोग या 15 लोग भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, तो मैं और भी चीजें जैसे लीनियर अलजेब्रा है, जो भी चीजें हैं उसको लेकर के आऊंगा, है ना. एंड जो मैंने विजय भव वाला जो सीरीज का मैंने बात किया था, वो भी मैं जल्द ही उस पर काम कर रहा हूं. एंड सर्टेनली वी विल कम अप विद दोज थिंग्स ऑल्सो. ओके, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, सपोर्ट एंड सर्टेनली for getting help also, है ना. So with full of self-esteem, you are free to watch these lecture series for sure. So we will see you tomorrow at 8. Till then, take care, bye bye, and thank you very much once again all of you for coming. Thank you. जय हिंद, जय भारत.